Ashutosh Gwalekar, though he was from Mumbai, but he used to practically hang around with us because we were all into this acting bit and fashion show. ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको जैसे कि महाभारत की हो और वहाँ पे आमिर खान जो है वो दुर्योधन बने हुए हैं? नहीं, ऐसा तो हमने पहले नहीं किया था. एक और कमाल की सीक्वेंस है ऑफ कोर्स खिलाड़ी में. The best girl यार दीपक, माशाअल्लाह देखते तो सही. Oh my God, look at this. अंदर क्या रखा था? Seriously speaking, मुझे कुछ याद नहीं है. I have no idea what was going on. Oranges थे कि it was crazy, I love दीपक तिजोरी की तिजोरी आज हम रेड मार रहे हैं. आजकल बहुत सारी हीरोइंस बोलती है ना मैंने तीनों खानों के साथ काम किया. उस टाइम दीपक तिजोरी, I think you were the man who actually romanced most of the Khans. Oh no, I don't. Romanced. Sorry. Yeah, romanced. How was it growing up and going to college? दीपक तिजोरी कॉलेज जाया करते थे कि बाहर थे usually? नहीं, कॉलेज मतलब कैंटीन में था और ज़्यादातर हम लोग we used to do a lot of cultural activities, तो हम लोगों की attendance लग जाती थी because we were those college cultural guys. So we used to get awards and trophies for the college. पढ़ाई काफ़ी की कॉलेज में, मतलब नहीं जाते हुए भी I kept on studying further because there was a lot of things I wanted to graduate and post-graduate and do a lot of stuff. So I wanted to just kind of secure myself. We used to spend more time in those rooms जहाँ पे practices होती थी. We used to get a lot of name with regards to intercollegiate competition, university level. So whether it was theatre or whether it was folk dance, whether it was all these kind of things. Yeah. So those days there was IPTAs and these university competitions which were very very strong. Because अभी भी है, अभी भी काफ़ी स्पिरिट है, तो वो स्पिरिट इतना ज़्यादा होता है कि सारे 8-8 घंटे प्रैक्टिस, 10-10 घंटे प्रैक्टिस. So it was fun. Those days in college was like amazing. Was that the same time जब ये थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे आमिर साहब के साथ, आशुतोष के साथ? Actually मेरे को एक्टिंग का कीड़ा वीड़ा नहीं था इतना. ये आशु, आमिर, फिर परेश हमारे सीनियर और शर्मन जूनियर, विपुल, अमृतलाल शाह जो अभी हैं, तो विपुल, JD, हम लोग सब NNK चट्टे बट्टे. तो I used to be in the folk dance. I used to be a dancer in college. वहाँ पे से मेरे को उन्होंने उठाया, बोला कि तू एक दो लाइन बोल ले यार प्ले में और एक कोरियोग्राफी कर ले हम लोग. So that is how I started, and then it went on to suddenly it became that okay, I started playing lead roles in the theatre. The one act plays that we used to go for competitions and all that. So I think that is how it all started. Yeah, of course, but they were much more senior in the sense where work was concerned. Amir was of course born in the family of Salman and all. Ashutosh Gwalekar, though he was from Mumbai, but he used to practically hang around with us because we were all into this acting bit and fashion show. ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको जैसे कि महाभारत की हो और वहाँ पे आमिर खान जो है वो दुर्योधन बने हुए हैं? नहीं, ऐसा तो हमने पहले नहीं किया था, पर हम लोगों ने काफी ऐसे experimental plays किए because Amir's brother-in-law who passed away unfortunately, he was our director, Mahendra Joshi, and he used to do these really weird plays, and his conceptualization of drama was completely bizarre. So I think that is where Makarand Deshpande took it up from. So Mac was also part of us. Yeah, so we were all like, it was like all of us together and we used to be practicing. Kabhi koi Marathi kar raha hai, kabhi koi Gujarati, kabhi Hindi, kabhi English. So all this, Firoz Khan Abbas, he was our senior again. So we were growing up doing all these things in college. आशिकी जब ये फिल्म आई थी, आपको अंदाजा था कि इतनी बड़ी फिल्म होगी? आशिकी particularly जब हम लोग कर रहे थे, तो I had done a couple of small roles in other films before that. तो मेरा ये था कि पता नहीं क्या होगा यार, this will be like one of the other films. But it was fun because it was a good experience to work with Marsa. There was a lot of new school which was happening with me, where Marsa was concerned because he is an institute himself, so we used to practically live with him. हम लोग उसे उनके घर में भी जाके बैठ जाते थे और ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस जाते थे. So that is how आशिकी बनते बनते काफ़ी कुछ हम लोगों ने, मतलब मैंने काफ़ी कुछ सीखा, and it was a great experience. Not really knowing कि इतनी बड़ी hit होगी, but Rahul was still not very sure about the success and the hit, and he was and it was raining those days and he was sleeping, and Marsa said, "Come, let's go and get him out and let him
be aware of the fact that he's given such a big hit. बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी भट्ट साहब की सेट पर जो आपको याद है, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसी तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं इनिशियल एक्सपीरियंस विद आशिक ही करूँगा, बिकॉज I was also not very sure of what I was doing. Because इतना इम्पोर्टेंट रोल मिल जाता है किसी एक्टर को, और जिसने इतनी स्ट्रगल की है, इनसे मैं 4 साल में निकाले थे, और मैंने हेंचमैन के भी रोल किए थे, जहाँ पे मेरे पूरी पिक्चर में एक लाइन थी कि सर आपका कॉल आया, इतना सा बोला था मैं पूरी पिक्चर में। तो आई वाज लाइक जो 6-7 हेंचमैन होते हैं उसमें से मैं एक हेंचमैन था, तो ऐसे रोल्स करते करते मैं यहाँ पहुँचा था। तो आई वाज ऑब्वियसली वेरी वरीड कि पता नहीं क्या होगा, एंड वेदर आई वाज डूइंग इट राइट, वेदर आई वाज नॉट। सो आई वाज just a kind of a actor who was going with the flow. And there was one scene which we were doing in Shastri Nagar. शुरू में आता है बिगिनिंग में उसमें, जहाँ पे मैं वो मास्टर को एक कहानी सुना था, और वो कहानी सुनते हुए ना वो डर जाता है। तो वो जो शॉट था ना, तो वो लंबा शॉट था, तो पहली बार मेरी लाइफ का इतना लंबा शॉट मुझे देना था, और मैं रेडी था, और मैं कैजुअली मैंने एकदम से शॉट में बोला कि टेक करते हैं, बोला टेक करते हैं, नो रिहर्सल, because he believes in that, but Sir is not very much into how many times you want to do rehearsal and stuff like that. So he goes for a take, and we were all ready because we were all actors. So we did the whole take, and after that suddenly he just got up and came and kissed me on my cheeks, and I was like, oh my god, like director and doing this. So it was like an amazing thing for me. It was like, oh my god, and the master and all these people, Mushtaq and all these guys, they were like, really clapping and stuff like that. So it was such a beautiful moment, because initially not knowing the fact that you will be able to carry it off, and then getting such a kind of a lovely gesture out of your director, I think that was like the day when I thought maybe, yeah, I can act. So I was like stamping it that, okay, I'll be able to do something. क्या बात है। It was an assurance. एक और कमाल की सीक्वेंस है, of course, खिलाड़ी में, the best girl यार दीपक। Oh my god, it was a good looking girl. You not look better, seriously. Oh my god, I am so embarrassed. I can never watch that again in my life. And that too with Tinu ji. Oh my god, I was asking, he's such a great director, I respect him so much, and I was doing such a stupid thing with him. I was like, oh my god. But it was that time, we were all going with the flow, not really knowing. And I think that's the best part. It used to happen those days, which doesn't happen now. उस टाइम पे हम लोगों को सीन ऑन द स्पॉट देते थे, फिर रहेगा नहीं रहेगा, फिल्म में क्या दिखेगा, फिल्म कितनी लंबी हो गई, क्या होना है, कैसी दिखेगी, कुछ पता नहीं. Because every day when you go there, the director will think, the writer will be there, they'll be giving you the scene, there'll be every schedule that happens, the next schedule we लोग plan करेंगे, उसमें कुछ scenes बनेंगे. So the film used to go on for a year. It was not like this, So it was like an experience which was not knowing what you're doing, but you have to give your 100%. So now actors get the facility of living the character. We used to be like complete zombies. When I was doing Jojita, I was doing Kirari simultaneously. So one side I am playing this buffoon, and the other side I am playing Shekhar Malhotra. It was like east and west. So totally ये सेट से निकल के वो सेट पे जाना है, और यहाँ पे मंसूर, और वहाँ पे अब्बास मस्तान. So they are also like completely poles apart, So to do such things, switch was I think very very difficult those days. Nowadays you get time, you get every facility. तो आप बॉडी बनाएंगे सर. हाँ, मतलब आप पूरे अपने उस कैरेक्टर के अंदर घुसेंगे. मुझे अभी भी याद है, भट्ट साहब हमेशा कहते थे, अभी मैं उनका वही चीज़, जब मैं फिल्में बनाता हूँ, और जब मैं फिल्में बनाता हूँ तो मुझे लोग, जो असिस्टेंट्स होते हैं, वो लोग बाहर भी काम करते हैं. The actors who work with me, they work outside, and they see the way, the kind of person I am. I'm kind of very easy, very chilled out on the set, and they feel कि okay, अरे यार ये करते हुए सर, sorry sir. I always think what exactly Bhatt Sahab says is we're just making films. We're not creating history. Okay, just come on, do it again, no problem. So that is how easy it is. It is how comfortably you can it's just cinema. Why do you take it like you're going to create a history out here? We're not. So it's like crazy, how people are so taking it like, okay, every film do this meticulously and this and that. So all those things have kind of now taken over. But I am still comfortable living the way what I've learned.
And in the same school, I am living with the same school, and I'm very happy living in the same school. अब खिलाड़ी का क्वेश्चन तो सुनिए. हाँ बोलिए. Are you ready for this? आपके listeners जानना चाहते हैं कि खिलाड़ी में वो जो जब बस में आप चढ़े थे, वो जो ड्रेस आपने पहनी थी, अंदर क्या रखा था? Seriously speaking, मुझे कुछ याद नहीं है. I have no idea what was going on. Oranges थे कि it was crazy, you know. I can't even see it. I'll show you. I still have. No, please. मैं आपको दिखाऊंगी. Just a second, because the other day I was saying I have to show you when I meet you, because मुझे याद है कि you know to me the definition of beauty. माशाअल्लाह देखते तो सही. Oh my God, look at this. How hot were you, Deepak Tijori? Are you kidding me? Look at how embarrassing this is. Oh God. Can't handle this. I love Deepak Tijori की तिजोरी आज हम रेड मार रहे हैं. Seriously. It's really awesome. शेखर मल्होत्रा एक बुरा लड़का नहीं था और बहुत ही फाइन लाइन था. इस फिल्म के बारे में मेरे लिसनर्स को बताएं. शुरू में जब मैं ऑडिशन के लिए गया था तो मुझे निकाल दिया गया था. What? हाँ, तो मैं नहीं था पार्ट ऑफ द फिल्म. तो पार्ट ऑफ द फिल्म नहीं था और उसके बाद में मैंने आशिकी की. उसके बाद चीज़ें चेंज हुई और वो लोग शायद ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फिल्म कर चुके थे. जब भटसा बूटी में दिल की माता नहीं कर रहे थे तो वहाँ से आए वो कुछ काम के लिए 2 दिन के लिए. मुझे कहा कि मंसूर से जाके मिल लें. तो मैंने भी यही बोला भटसा फिर को तो निकाल दिया था यार उन्होंने. मैं बोला मैं वापस तो क्या नहीं तुम चले जाओ तुम्हारी ज़रूरत है. जब मैंने रोल किया तो मैं डरा हुआ था इनिशियली, बिकॉज एक तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी जो एक्टर्स के बीच में और मंसूर के बीच में हुई थी. तो मैं डरा हुआ था कि यार ये मंसूर ऐसा डायरेक्टर है ऐसा डायरेक्टर. सो इट वॉज अमेजिंग टू व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई फर्स्ट सीन एंड आई डिड माई फर्स्ट शॉट एंड मैंने सुना था कि 40 टेक लेते हैं 50 टेक लेते हैं और एक्टर पूरा ख़त्म हो जाता है, यू नो. तो मैं वैसे डरा हुआ था बिकॉज आई एम जस्ट द ऑपोजिट. मोर द नंबर ऑफ टेक्स माई परफॉर्मेंसेज विल गो डाउन. There are certain actors, more the number of takes, they get better. So I come from the other school. So when I started did my first scene, we were in Film City and मेरे साथ में जो और भी लड़के चेंज हो गए थे ना, जो जिलेन के साथ में और राजपूत बॉयज थे वो लोग भी चेंज हो गए थे. तो ये नए सेट आया था. तो we were all actor breed. तो हम लोगों ने वो सीन किया, एक शॉट दिया. हाँ वो हम लोग जो वहाँ पे वो जो पॉइंट पे हम लोग वो लड़की को देखने की बात हो रही थी. और लड़की को देखने के वो बोलता था कि वहाँ पे खड़ी है तो वो इशारे से मैं बात कर रहा हूँ. और उस पॉइंट के ऊपर मैंने जब परफॉर्म किया तो तुरंत उसके बाद मंसूर ने बोला कि ओके नाउ ही शिफ्टेड द कैमरा. सो आई वाज वंडरिंग ऐसे ठीक हुआ या फिर ये इसने स्क्रैप कर दिया या अभी दोबारा वो एंगल से ले रहा है. फिर उसने बोला कि अभी इसकी बात का आगे चलते हैं. फिर भी मैंने कर दिया. फिर भी मैंने किया 2-3 मिनट डायलॉग कर दिए. उसने कोई रिटेक नहीं बोला फिर नहीं बोला. फिर मैं साइड में निकल गया बिकॉज आई लॉस्ट माय पेशेंस. ऐसे यार ये तो मेरे को निकाल देगा फिल्म में से. अभी नेक्स्ट डे बोलेगा कि यार ये तो बेकार है. तो मैंने बोला यार मंसूर व्हाट इज हैपनिंग, ठीक हो रहा है? तो बोला वो टेक ओके थे. क्यों थे वो और चाहिए क्या? नहीं मेरे को नहीं चाहिए. बोला ओके फिर हाँ ओके फॉर मी. तो you know he just moved on. So you know I only felt कि अच्छा ठीक है everything is okay. So it was a very thin thing, you know. I was a little scared because it was a film which I was wanting to do at that time. और निकाल दिया गया और फिर मुझे बुलाया था. I was very happy, but at the same time I wanted to do it right. Nowadays it is kind of a cult, but उस टाइम पे इतनी बड़ी हिट नहीं थी मुझे लगता है जितनी अब है. Really? It's like Andaz Apna Apna was like, you know, not a box office success, but it became a cult film. We all loved that film like crazy. But that is how I think it happened with Joji. आईना इस फिल्म मुझे याद है एक बहुत ही खूबसूरत सीन है जहाँ पर आपकी वजह से अगेन आई रिमेम्बर जूही चावला एंड जैकी श्रॉफ का रोमांस जो है वो आप करवाते हैं. Okay. Any incident that you remember on the sets of it? It was great fun doing that film because I was playing young brother Jackie and I was a huge fan of Jackie. Since Hero, I was crazy about it. Oh. He was my role model. I didn't have a longer role though, but I had a small stint. It was a important and very exciting role for me because I was like almost like a catalyst, you know. So it was wonderful to do that. Deepak Salim was a new director that time, you know.
And being on the set, it was I was more in awe of एक साइड जैकी है, एक साइड जूही है और एक साइड डिंगी है, अमृता सिंह है. You know, so they were all three such huge stars for me. So I was almost like, you know, all the time, okay, I hope I don't make any mistake, I hope I do it right, because it was just the initial stages of my career when this happened to me. So I think I more of it sailed through Aina, not really realizing that it was going to be such a good film and at the end of the day, you know, come across as such a beautiful story. So I was just very happy that I think that's the only Yash Raj film that I have done. एक ऐसी फिल्म जो आपने की थी एंड जो आपको बिल्कुल लगी नहीं थी कि चलेगी लेकिन दौड़ी. That was Kabhi Haan Kabhi Na. For the whole passion that Kundan had for the movie, you know, I became a part of it. I said, no, I'll do it for the man himself. Yeah. Because, you know, I loved his Janvi Teyar. I was a great fan of Janvi Teyar. And I kind of literally fallen off my seats in metro. all those moments of Janvi Teyar. So I said, no, I have to do it only for him. And then I did it, and in fact, not even realizing that the movie would really, you know, become this big. आजकल बहुत सारी हीरोइंस बोलती है ना, मैंने तीनों खानों के साथ काम किया. अच्छा वैसे. This time Deepak Tijori, I think you were the man who actually romanced most of the Khans. Oh no, I don't. Romanced. So, sorry. Yeah, romanced. अगली फिल्म मेरी लिस्ट पे जो है वो है अंजाम. What a film! What a film! Another film जो हमने शाहरुख खान के साथ की. और मुझे अब तक याद है कि चने के खेत में तो दीपक तिजोरी के लिए गाया गया था. Let's be real. Let's be real. ढोल बजाते हैं. Yeah, that film was fun. It was happening in Mauritius, and it was good outdoors also, and it was good to work with Madhuri. It was good to work with Shahrukh because he was playing a completely different character. So आप उस फिल्म में डॉक्टर का रोल कर रहे थे ना? नहीं. तो कौन थे डॉक्टर उसमें? Doctor नहीं था. I was a flight. No, you were a pilot. You were a pilot in that film. हाँ मुझे याद है because I remember this one was very cool professions. और मुझे याद है कि you almost convinced us that अगर पति होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए. I think you gave your profession बहुत ज़्यादा respect. क्योंकि आपने as an actor acting को सबसे पहले रखा. क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि रोल छोटा बड़ा नहीं होता, actors छोटे बड़े होते हैं. और ये example I think is shining right in front of me today. Yeah, I mean, I would say that I have always believed in one thing when I was doing all my work as an actor, even when Vastav came to me, or rather even Gulam for that matter. You know, Gulam was another, I would like to mention that because those days I had said no to a couple of films to Bhatsa. And मैंने बोला था Bhatsa ये नहीं करेंगे. So जब ये Gulam उन्होंने actually complete कर ली थी, उनको चार्ली नहीं मिला था. कुछ 1.5-2 साल उन्होंने चार्ली ढूंढने की कोशिश की. उसके बाद आमिर ने सजेस्ट किया विक्की को और विक्रम भट्ट एंड फिर विक्की ने मुकेश जी को बोला. तो कैन यू इमेजिन द फर्स्ट थिंग व्हेन मुकेश जी कॉल्ड मी एंड ही सेज कम ओवर आई वांट टू मीट यू. सो व्हेन आई वेंट ओवर देयर इट वाज लिटरली लाइक दिस कि विक्की यहाँ बैठा है सोफा पे, मैं दरवाजे पे हूँ और मुकेश जी यहाँ बैठे हैं. और मुकेश जी मैं दरवाजे पे बोल रहा हूँ क्या हुआ. होता है विक्की तेरे को कुछ सीन सुनाएगा, करना है तो हाँ बोल देना, नहीं करना है तो मेरे को मालूम है आजकल तू बहुत ना बोलता है. मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो मैंने विक्की को बोला विक्की जितना है उतना ही बताना. एंड यू नो ही नरेटेड 3 scenes to me and I got up and I told Mukesh I said I'm doing so and I walked away. So you know that was the time when I used to always believe and I always tell these actors now because nowadays when I meet actors they are saying सर कितना लंबा रोल है. तो मैं इनफैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द रोल, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रोल. यू हैव टू लुक एट द स्ट्रेंथ, कितनी तुम्हारी वहाँ पे पावर है उस रोल के अंदर. छोटा है तो डजंट रियली मैटर. सो दैट इज व्हाट आई बिलीव. वास्तव वाज द सेम थिंग. आई नो यू आर वेरी बिजी मैन. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी थैंक यू for giving me your time. No, thank you very much that you know making me reach the audience that I have no idea, you know, they still exist, and I'm so happy to have reached them today through you and through your radio channel, which is lovely, and I really thank you for this. Thank you. Radio Nasha.